Hello dear friends, I am Rajendra Jatana on this side. I have come up with 3 tricks today. These magic short tricks are on application of derivatives. And look here, the first one is trick number 1, area of triangle found by tangent at any point on the curve. 2xy equal to x square with axis is constant and it is equal to a square. देखिए एक दफ़ा दोबारा से क्वेश्चन ट्रिक को समझने की कोशिश कीजिए. वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फाउंड बाय द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन दिस कर्व 2xy equal to a square with the axis means x axis y axis. So ये जो टेंजेंट है x axis y axis से मिल रही है and a triangle is found. We have to find the area of that triangle. This is the trick. Very simple trick is there. Now here is the question, example number 1. Area of triangle found by the tangent at any point on the curve xy equal to a square. यहाँ देखिए 2xy है, यहाँ xy है. With the coordinate axis is one of the option is there. अगर ये 2xy हो जाता तो आंसर हमारा a square आना था. Now look here, as per short trick, if curve is 2xy equal to a square, then area of the triangle is a square. If curve is xy equal to a square, देखिए ये xy है, xy equal to a square है, तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 2xy is equal to 2a square, so area of this will be 2a square and option C is there. Simply 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2xy बन गया is equal to 2a square, so area of the triangle is 2a square. This constant is always there. अगर 2xy a square है, यहाँ पे 2xy 2a square है, so area will be 2a square. Option C is there. Now let us go to example number 2. We have to find the area of triangle formed by the tangent at any point to the curve, and curve is 3xy is equal to a square by 2 is one of the option. Now look here, 3xy is a square by 2. xy की वैल्यू निकाल लीजिए, 3 उधर चला जाएगा, डिनोमिनेटर में a स्क्वायर बाई 6 बन गया. हमें कितना xy चाहिए, हमें चाहिए 2xy. हमें कितने चाहिए, 2xy. Now look here, 2xy here is 2a square by 6, that is a square by 3, and the option C is there. Option C is there, right? C is equal to a square by 3. So very simple, very simple. आपने 2xy की वैल्यू निकालनी है, वेरी सिंपल. 3xy दे रखा है, हमने 2xy की वैल्यू निकाल दी है, एंड दिस इज a square by 3. Example number 3. If the area of triangle formed area of the triangle included between the axis and the tangent to the curve xy raised to power n is equal to a raised to power n plus 1 is constant, then value of n, we have to find the value of n. Now look here, हमारी कर्व तो 2xy है, हमारी कर्व तो 2xy है. अब आप इसको क्या कीजिए कि xy रेस्ट पर n दिया हुआ है, a रेस्ट पर n प्लस 1, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो दैट इट बिकम्स ऑफ द शेप 2xy. अगर आप यहाँ पे y n की जगह 1 लगा देंगे, ये 2xy बन गया और a बन जाएगा a की पावर 1 प्लस 1, दैट इज a स्क्वायर. n is 1, n is 1. देखिए 2xy a स्क्वायर बन गया, n 1 लगा दीजिए, so value of n is 1. So option B is there. Value of n is 1. Very simple, very simple.
एक एक मिनट के क्वेश्चन है. नाउ लेट अस गो टू ट्रिक नंबर 2. Look here. If two curves are of this shape, a1x square plus b1y square is equal to 1, and second is a2x square plus b2y square equal to 1. They are cutting each other orthogonally. Orthogonal is perpendicular to each other. So they cut orthogonally to each other. Then 1 over a1 minus 1 over a2 is equal to 1 over b1 minus 1 over b2. This is the trick. This trick you have to remember. If the curves are of this shape, x square होना चाहिए, y square होना चाहिए, coefficients होने चाहिए. Now look here, the example is this. ये देखिए x square, यहाँ देखिए y square. x square का coefficient 1 over a square, यहाँ पे y square का coefficient 1 over b square, और दूसरी वाली कर्व में x square का coefficient 1 over l square and y square का coefficient minus 1 over m square. अब अप्लाई करेंगे 1 over a1 minus 1 over a2, 1 over a1. Now look here, if you apply this trick, a1 is 1 over a square, a2 is 1 over l square. Look here, यहाँ a1 x1 था, a1 x square. Look here, a1 के बदले में 1 over a square लिखा हुआ है, b1 के बदले में 1 over b square लिखा हुआ है, a2 के बदले में 1 over l square लिखा हुआ है, 1 over l square लिखा हुआ है, b2 के बदले में माइनस b2 के बदले 1 over m square लिखा हुआ है. यहाँ पुट कर देंगे 1 over a1 minus 1 over a2 is equal to 1 over b1 minus 1 over b2. Just write it here and the answer comes a square minus b square is equal to l square plus m square. माइनस माइनस प्लस बन जाएगा. तो यहाँ पे देखिए दिस इज़ दी ऑप्शन a square minus b square, a square minus b square is equal to l square plus m square. Oh, this C is there. Option C is there. Now let us go to the next trick. Trick number 3. अगर fx की शेप a sin x plus b cos x over c sin x plus d cos x है. If a function will be increasing if only if ये जो determinant है a, c, b, d should be positive. It will be decreasing if this determinant, same determinant is less than 0. Very simple. Now example number 1. यहाँ देखिए fx is lambda sin x plus 3 cos x. मिलता जुलता है. a के बदले में lambda आ गया, b की जगह में 3 आ गया, c की जगह पे 2 आ गया और d के बदले में 6 आ गया. डेटर्मिनेंट बनाएं, डेटर्मिनेंट बना दीजिए. इसके डेटर्मिनेंट बना देंगे. इट बिकम्स लैम्डा 2 3 6. सो फ्रॉम हेयर यू गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा. ऑप्शन बी इज देयर. ऑप्शन बी इज देयर. लैम्डा इज ग्रेटर देन 1. लैम्डा इज ग्रेटर देन 1. ऑप्शन बी इज देयर. वेरी सिंपल. एग्जाम्पल नंबर 2. If fx is equal to sin x plus b cos x over sin 4x plus 4 cos x. यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ b है, यहाँ 4 है. ये देख लीजिए, ये डिटर्मिनेंट बन गया. सो 4 minus b is greater than 0 or b is less than 4. Option B is there. Option B is there. Very simple. Simply determinant बना दीजिए कोफिशिएंट्स का. So now you have seen that all these 3 tricks. This is trick number 2, trick number 3, and this one is your trick number 1. All the 3 tricks are very, very simple, and I expect that if such type of questions are there, you will be doing it within
minute. Thank you very much for viewing my videos. I'll request you to please share them among your friends and like the videos and subscribe it. Thank you very much. Good night. Bye.